Sakshi Malik's family. The moment news broke out that Sakshi Malik has withdrawn protest, there were lots of questions being raised on whether Sakshi has pulled out support itself from the cause. But family members also have now reiterated what Sakshi has said, saying that she is very much standing by her statement and her demand, wanting for Brij Bhushan's arrest. She's just only going to be returning to her duty for the moment. Listen in. जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहाँ पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। हम जो है लगातार डटे हुए हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको जल्द बता दी जाएगी। हमारी साक्षी मलिक से बात हुई है, कोई तो आंदोलन वापस नहीं हुआ है। आंदोलन प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। रही नौकरी ज्वाइन की, वो एक जिम्मेवार पद पे है, वहाँ जिम्मेवारी पद के हिसाब से वो दोनों काम संभाल रही है, आंदोलन भी संभाल रही है और अपने को जैसे जिम्मेवारी के पद के हिसाब से एक आध बार चली गई होगी तो नौकरी ज्वाइन ला लो या वैसे ला लो, मतलब एक बड़ा पद होने के कारण उसकी जिम्मेवारी बनती है, तो काम रुकता है तो उसको सुचारू रूप से चालू रखा जाए। धरना तो चलता रहेगा जी। और जो ज्वाइनिंग की बात है वो एक बहुत बड़े पद पे बैठी हैं जिसपे उनके साइनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो उस पे अपना जो उनका कर्तव्य है वो भी पूरा कर रही है और अपना सत्याग्रह भी पूरा कर रही है। नहीं, ये सारी बातें विड्रॉ करने वाली बातें हैं, सारी गलत बात हैं, झूठी बातें हैं। कोई आंदोलन विड्रॉ नहीं हुआ है, जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। All right, we know many of the wrestlers have spoken with this regard, may not have pledged support to the wrestlers, but of course speaking for the wrestling fraternity of India, claiming that this has really brought a lot of shame for the wrestling community and fraternity, and of course India's image globally has certainly been hit. Listen in. मेरे को भी आपके माध्यम से पता लगा है, मीडिया के माध्यम से, और मेरी किसी भी पहलुओं से कोई बातचीत नहीं है। पर अगर साक्षी मलिक ने अपने वापिस रेलवे में की नौकरी ज्वाइन की है, छुट्टी में थी, तो उन्हें कुछ सोच समझ के अच्छा फैसला लिया, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि पहलवान अभी एशियन गेम्स है, अगले ओलंपिक है, और कुश्ती काफी बुरे दौर से गुजर रही है। ओलंपिक 4 लगातार 4 ओलंपिक मेडल आने बाद भी जो पिछले ये टाइम है तो काफी बुरा कुश्ती का लिया रहा। और मेरा मानना है कि साक्षी मलिक ने अगर ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर अच्छा फैसला है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जांच चल रही है, कोर्ट अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, और किसी ने कुछ गलत किया तो सजा मिलनी चाहिए। तो अभी अपना पूरा फोकस अभी एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए लगाए। तो पता चला कि जैसे माननीय गृह मंत्री जी से मिले हैं और उनकी बातें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी, उनकी जो मांगे थी वो पूरी हुई है, और जिस वजह से उन्होंने स्टेप लिया है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हमेशा, हमारी पार्टी हमेशा संवेदनशील, महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है। All right, I'm going to quickly cut across to Milind Sharma, who's been tracking those developments. Milind, there was a lot of talk that wrestlers who are fronting this protest, Olympians, have now changed their mind, withdrawn from the protest, not too sure why. But quickly, these wrestlers came out refuting those claims, saying they are very much standing with that cause. They're just parting from the protest site and going back to their regular duties, and are going to wait and hope that justice takes its course. Tell us more on all the questions that were raised about their sudden withdrawal. What really happened? Give us the timeline. Well, Nabila, there is much to be discussed behind the reasons that have actually led them to resume their jobs in the Northern Railways on the 31st of May. This has happened right after they have returned from Haridwar, where they were going to immerse their medals that they have worked so hard to win for the country. And there they were stopped by Rakesh and Naresh Tiket, and they were told to have given a 5-day ultimatum or a time of 5 days to decide what should be the next course of action for the protest. But in the meantime, we hear that they have resumed their jobs in the government, that also in the Northern Railways, because Sakshi Malik along with Bajrang Punia and Vinesh Phogat have
some files that they need to sign. They are appointed as officers on special duty in the sports department of the railways. And now the fact that the government had already removed them from the Jantar Mantar premises, all their tents and all were also removed. Will they be allowed to physically carry on the protest is the real question. We no doubt don't question the fact that they are genuinely, standing for their cause and they are fighting for the cause that is there. But will they be allowed to physically raise their voice and protest once again after being put in a government job which they have accepted, and they have not given us reasons why they have accepted to be part of the government job? So that is one very big question there, Nabila. So whether there was the meeting with Home Minister Amit Shah was indeed fruitful or not is again clarity we don't have, even though the wrestlers claim that the meeting with Amit Shah was inconclusive. But quickly, right after the meeting, we believe they've decided to call off their protest. So a lot of unanswered questions, but one thing's for sure, what really takes the takeaway from this is that the protesters have withdrawn their sit-in protest that went on for over a month and have now decided to continue their protest while they go on with their routine duty at the railways, the government job that's allotted to them.